We continue with the discussion of derivation of Bernoulli's equation. We arrived at the Bernoulli's equation, and this can be written most of the time in the form as this. This is a standard form of writing Bernoulli's equation. इसको कभी हम as per our convenience and as per our requirement, कभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं और कभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं. बात एक ही है, क्योंकि ये कंडीशंस ऑलरेडी हमने एस्यूम कर ली कि जो इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं, which is Bernoulli's equation, Daniel Bernoulli for that matter, it's for incompressible fluid, for steady flow, along a streamline, and so on. So ये कंडीशन उस पर इम्पोज होंगी और ये वाइडली इस तरह से यूज की जाती है. At 2 points in a fluid flow, ये इस तरह भी लिखी जाती है, P1 over rho plus V1 square over 2 plus GZ1 at point 1 will be equal to the pressure at P2 rho plus V2 square over 2 plus G into Z2, because this is constant. अब इसमें क्या है कि स्ट्रीम लाइन में किसी पॉइंट पर भी फ्लूइड फ्लो पर अगर हम देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट जो वैल्यू इक्वेशन की प्रेशर फोर्सेस पॉइंट 1 पर होंगी वही इन दैट स्ट्रीम एट सर्टेन अदर पॉइंट एट अ डिफरेंट पॉइंट वो वही रहेंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी. तो ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है. एंड दैट्स व्हाट वी हैव राइट. जब हम ये अप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू आती है. अब इसमें जो टर्म्स अपीयर हो रही हैं उनको नाम दिए गए, क्योंकि हमने बेसिकली जिस वक्त फोर्सेस को कंपेयर किया, कंसिडर किया, तो हमारे पास कौन सी फोर्सेस थी? काइनेमेटिक फोर्सेस को हम देख रहे थे, पोटेंशियल फोर्सेस को देख रहे थे और फ्लूइड फ्लो को देख रहे थे. तो तीनों टर्म्स उसमें अकर करती हैं और उन टर्म्स का इसलिए हम उनको एसोसिएट करते हैं ये पर्टिकुलरली नॉमेनक्लेचर से. सो P over rho is normally known as the flow energy. ये सारी एनर्जी टर्म्स हैं. P over rho is flow energy. P square over 2 is the term that is known as kinetic energy, क्योंकि इसमें मोशन आ गई, काइनेमेटिक्स आ गई, वेलोसिटी v अकर कर रही है. तो एंड देन द पोटेंशियल एनर्जी Gz. Gz is energy related to the height at which we are considering the energy levels. फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी खड़ा है, दरिया में है, नहर में है, कुएं में है, तो आपको पता होगा कि द पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन बाय एज रो Gz. तो यहाँ क्योंकि रो से हम डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ Gz अकर कर रहा है, और सो दिस टर्म रेफर्स टू potential energy, and the sum of all these energies is always constant along a streamline. The Bernoulli equation states that the sum of the kinetic, potential and flow energies of a fluid particle along a streamline during the steady flow is constant. तो आप देखिए इस स्टेटमेंट में कई कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर ये इक्वेशन वैलिड होती है. ये इक्वेशन हम अराइव करते हैं, इस पर पहुंचते हैं, और दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड इक्वेशन. इट हैज many applications used by hydraulic engineers, irrigation engineers and other scientists and so on for their consideration.
The Bernoulli equation can be viewed as conservation of mechanical engineering principle. इसको बाज़ औक़ात कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि बहरहाल ये हमने डिराइव की है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर. दिस इज इक्वलेंट टू द जनरल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व any conversion of mechanical energy and thermal energy into each other, and thus the mechanical energy and thermal energy are conserved separately. तो यहाँ पर ये पॉइंट आउट किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि although the mass cannot be created or the energy cannot be created, but however these energy can be transformed from one form to another form. लेकिन यहाँ पर ये एक कंसिडरेशन है कि मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी की कोई कन्वर्शन नहीं है. नो थर्मल एनर्जी इज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड व्हेन कंसिडरिंग incompressible steady flows along a streamline. The Bernoulli equation states that during steady incompressible flow, negligible friction, तो viscosity almost है नहीं, friction है नहीं, so heat generation, thermal generation is almost not there, or mechanical energy stays in its form, and the sum of all the energies, it remains constant. There is no dissipation of mechanical energy or thermal energy during the whole process. तो ये इसका लुबे-लुबाब है कि energy is not being converted from thermal energy to mechanical energy और vice versa. क्यों? क्योंकि हमने ये assume किया कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, और आपको पता है कि जब फ्रिक्शन होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो वहीं से हीट जनरेशन भी हुआ करती है. मगर यहाँ पर वी आर सेइंग दैट इट इज एब्सेंट.